Hello and very good evening, everyone. I welcome you all for this Wednesdays with Mukhmohit live session. Beta, the today's topic that is primarily for the upcoming FMG exam. So I know, is it audible? Everybody can hear me? Yeah, very good evening. Yash Desai, FOMO Medico. Very good evening, Devesh Mehta. Hello everyone. Namaskar. Very good evening. कैसे हैं आप सब लोग? So, yeah. स्टूडेंट्स अभी ज्वाइन इन कर रहे हैं. तैयारी कैसी चल रही है? हाउ मेनी ऑफ यू आर फ्रॉम हु आर प्रिपेयरिंग फॉर एफएमजी? आप में से एफएमजी कितने लोग प्रिपेयर कर रहे हैं जो अभी लाइव सुन पा रहे हैं? हाउ मेनी ऑफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एफएमजी एग्जाम? गुड इवनिंग राहुल. गुड इवनिंग वेरी मच. हेलो आकाश. वेटिंग फॉर काउंसलिंग. अच्छा अभी चल रहा है. चलो एनीवेज हार्टी कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर क्लियरिंग दिस नीट एग्जाम. नीट का आई थिंक कर रहे होंगे या INI सेट. सो वेरी नाइस. यश, राहुल सोनी, ओम प्रकाश, नमस्कार. वेल वेरी गुड इवनिंग बेटा. ये जो आज का सेशन रहेगा या आगे अभी 2-4 हफ्ते जो हम सेशंस करेंगे दैट इज़ प्राइमरली फॉर द FMG एग्ज़ाम. अपकमिंग अभी 30 जुलाई को FMG एग्ज़ाम आ रहा है. तो वन थिंग यू हैव टू इंश्योर कि बेटा जो भी रिजल्ट होगा वो तो आपके हाथ में नहीं है, बट आज से लेके 14-15 जून से लेके जो 30 जुलाई तक का टाइम है आपके पास, 1.5 मंथ, ये जो 1.5 महीना है, आई एम वेरी कॉन्फिडेंट कि आप इस बात को समझोगे कि ये जो 1.5 महीना है ये डिसाइड करेगा कि अगले 6 महीने क्या आप इंटर्नशिप करेंगे या फिर आप बैठ के दोबारा तैयारी करेंगे. आई होप यू अंडरस्टैंड दिस राइट. सो 1.5 मंथ में अपना आज ही बैठ के आप एक पेज लो, एक पेज के ऊपर प्रॉपर तरीके से लिखिए कि आज की डेट ये है, मैंने ये शेड्यूल करना है. अगर आप कर रहे हैं तो वेरी नाइस. जिन स्टूडेंट्स ने अभी नहीं किया है तो यू हैव टू सिट डाउन एंड स्टार्ट प्रिपेयरिंग. मैं हर वेडनेसडे को एटलीस्ट कम्युनिटी मेडिसिन को लेके आई विल बी कमिंग अप ऑल द इम्पॉर्टेंट आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में जो भी टॉपिक्स रिपीट हुए हैं, जो भी हमारे नई चीज़ें आ रही अपडेट्स हैं, दोज थिंग्स आई विल बी डिस्कसिंग विद यू ऑन ऑल द वेडनेसडेज टिल योर FMG एग्जाम. सो एक अपना शेड्यूल बनाओ और जो रिजल्ट है वो तो आपके हाथ में नहीं है, बट जो आप अभी कर सकते हैं 1.5 मंथ में, दैट इफ़ यू आर नॉट डूइंग तो फिर गलती किसकी हुई? फिर तो अपनी खुद की गलती हुई ना. सो मेक श्योर यू आर डूइंग दैट राइट. सो ये बड़ी पुरानी कहावत है कि मतलब कहते हैं कि ये सुना ही होगा आपने कि सीढ़ियाँ उन्हें मुबारक जिन्हें छत पे जाना है. हाँ, सीढ़ियाँ उन्हें मुबारक जिन्हें छत पे जाना है, हमारी मंजिल तो आसमां है और हमें रास्ता खुद बनाना है. सो 1.5 महीने में 1.5 मंथ यू हैव टू फाइंड योर ओन वे. व्हाट डेट, व्हाट सब्जेक्ट यू वांट टू डू. किसी का बायोकेमिस्ट्री वीक है, किसी का फार्मा वीक है, किसी का पैथोलॉजी वीक है, किसी का मेडिसिन सर्जरी नहीं हो पा रहा, किसी का कम्युनिटी मेडिसिन वीक है. सो एक अपना शेड्यूल बनाइए. यू सी व्हाट योर टॉपिक्स आर मिसिंग. ये 15-20 दिन आर द लास्ट 15 डेज जो आप उन चीज़ों को पूरा कर पाओगे. अपना रास्ता खुद बनाना है ना. सो लास्ट 15 डेज यू मेक योर ओन प्लान एंड यू स्टार्ट वर्किंग ऑन दैट प्लान. ये बहुत ज़रूरी है. प्लान भी कई लोग बनाते रह जाते हैं, फिर वो वर्क नहीं हो पाता. सो मेक श्योर दैट यू आर स्टिल वर्किंग ऑन योर प्लान एंड आई ट्रस्ट यू 100% कि आप लोग अच्छी तरह अपनी तैयारी कर रहे होंगे एंड यू विल मूव फॉरवर्ड राइट. सो यश देसाई, Abhinandan Karthikeyan, English please. Yes, of course, it has to be in English, but usually we are mixing the languages and ऐसे ही चलता है. So anyways, let's move on and talk about the system. The first thing that we are going to do, that is okay. Yeah, let's move on. Beta, I think you can see the screen today and screen right now. Today we are on 14th of June, so it is half of midway of June.
And this is One Touch PSM. It is live on YouTube, also live on my Facebook page. And all those students who have attended my sessions before, ठीक है, but all the students who are new today to this session, these are the sources that I usually use during the classes, during the sessions. Ye sources are very handy. These are handy resources that you have which you can use to clear your FMG exam or any exam for that matter. It could be NEET exam, INSET exam. Sources mein first and foremost what you have to do is beta join this Telegram group. Telegram group mein shoot all your doubts. I take care of this Telegram group personally, and aap in doubts udhar pe dalte hain and I try to answer them usually in the night time, evening time पे मैं सारे डाउट्स उस दिन जितने भी आए होते हैं वो सारे क्लियर करता हूँ. प्लीज़ नोट टेलीग्राम ग्रुप पे नो पोस्टिंग ऑफ सब्सक्रिप्शन, शेयरिंग ऑफ ऐप्स, बिकॉज आप लोग बैन हो जाओगे. फेसबुक ग्रुप है हमारा. ऑफ कोर्स जिन स्टूडेंट्स ने मैरो ज्वाइन किया हुआ है, यू हैव अ ब्यूटीफुल प्लेटफॉर्म, मैरो लिंक्स फेसबुक ग्रुप, फेसबुक पेज. इंस्टाग्राम इज प्राइमरली फॉर अपडेट्स एंड जितने भी न्यूज़ अनाउंसमेंट्स हम करते हैं इंस्टाग्राम से करते हैं. सो यू कैन वॉच दिस इंस्टाग्राम प्रोफाइल. एंड ये वेबसाइट है जहाँ पे सारा आपको PDFs मिलेंगे. So you will get all the PDFs, you can download all the guidelines, everything you can download, and this is what you have for your helping you for your preparation for your exam, right? So let's move on. Today I have two updates for you, beta. Of course these may not be very important from your FMG exam point of view, but yes, in case you are preparing for your NEET exam next year, or you are preparing for your AIMS INSET exam or UPSC Combined Medical Services exam, NORCET exam, nursing exam, कोई भी exam आप public health से related कोई exam देंगे, so these updates may be handy for you. The update number one is that the government of India has given the new food safety indices. So according to food safety indices, ये होता क्या है, FSI Food Safety Index कहते हैं. FSI stands for the Food Safety Index, the latest 5th food state इंडेक्स. ये 2018-19 में फर्स्ट टाइम शुरू हुआ था. इस FSI के अंदर टोटल देर आर 5 पैरामीटर्स. इन FSI फूड सेफ्टी इंडेक्स देर आर 5 पैरामीटर्स. पहला पैरामीटर होता है हाउ सेफ द फूड इज इन डिफरेंट स्टेट्स. सो फर्स्ट पैरामीटर इज दैट व्हाट आर द ह्यूमन रिसोर्सेज एंड द डेटा विच इज कलेक्टेड फ्रॉम डिफरेंट स्टेट्स. कितने वहाँ पे खाने की जगह हैं, कितने कुक्स, सर्वर्स एंड हाउ मेनी ह्यूमन रिसोर्सेज क्या है. कंप्लायंस टूवर्ड्स द फूड रेगुलेशंस. फूड टेस्टिंग वहाँ पे हो रही है, अगर हो रही है तो उसका सर्वेलेंस डेटा, हाउ इज द सर्वेलेंस डेटा बीइंग कलेक्टेड. Training and capacity building for all the departments related to food and nutrition. It could be agriculture, it could be food supply, it could be food logistics, it could be food chain, it could be restaurants, it could be anything. So regarding training and capacity building regarding food safety in particular states. And last is consumer empowerment, के उनके grievances कहीं पे पहुंच रहे हैं और उनका redressal कैसा हो रहा है. So ये 5 points है, 5 variables हैं जिनके बेस पे हम FSI बनाते हैं. FSI 2018-19 में शुरू हुआ था, but the latest FSI was released in June, अभी कुछ दिन पहले, June 2023, and it is a quantitative, this could be your MCQ, it is a quantitative and qualitative model for ensuring food safety. So ये both qualitative model होता है. According to the food safety index जो release हुआ है, the top state in India, as always it has been, is my favorite state, that is Kerala. And a wonderful state. Of course, I belong to Punjab. The second in line is Punjab. And third is another beautiful state, that is Tamil Nadu, state of Tamil Nadu. So these are the state number 1, 2, and 3 for the food safety index in India. From smaller states, we have Goa, Mizoram, Manipur, and Sikkim. Union territories, Jammu Kashmir tops the list, and then you have is Chandigarh and Delhi. So these were like the food safety indices which was released. Food safety में बस ये आपको ज़रूरी है, what is food safety index? It is a quantitative and qualitative, and the top of the chart is Kerala. Next, update number 2 for you. Update number 2 is regarding the non-communicable disease program. पुराना नाम इसका था National Program for Prevention and Control of Cancer, Diabetes, Cardiovascular Disease, Stroke एंड लिवर डिजीज. ऐसा सा लंबा सा नाम होता था जिसमें डिजीज के नाम थे प्रोग्राम के अंदर. सो दैट वाज द नॉन कम्युनिकेबल डिजीज. बट वेरी रिसेंटली इन मई 2023, ये अपडेट आपकी मई 2023 की है. May 2023, the name of this
program, National Program for Prevention and Control of Cancer, Diabetes, Cardiovascular Disease, Stroke and all the rheumatic fever and liver disease, ऐसा लंबा सा प्रोग्राम का नाम था, सारी डिजीजेस बीच में डाली थी. ये शुक्र है चेंज हो गया. जब तक आप प्रोग्राम का नाम बोलते हो तब तक तो बंदा ही पूरा हो जाएगा ना. So of course, with due respect to everyone, so they changed the name of the program. Now this program name is very simple. It is the National Program for Non-Communicable Disease. NP-NCD is the new name, National for Prevention and Control of Non-Communicable Disease. इसको प्यार से NP-NCD कहते हैं. That is the update number 1. Update number 2 is that of course the name change हमारी बात हो गई है. It is the name change. Next, what is the burden of cardiovascular disease in India? Please note that the burden of cardiovascular disease in India is the highest. It is in the world, it is highest. In India, it is highest. आप ये देख सकते हैं that out of the total deaths, 63% of deaths. Can you see this figure? This pie chart, kind of pie chart. So ये donut chart है वैसे तो. So in this figure, what you can see is that 63% of all the total deaths are because of the non-communicable disease. Out of the non-communicable disease, out of 63, 27% is because of the cardiovascular morbidity, which is immense. Roughly ले दे के कह सकते हैं 1/3 of all the deaths, 1/3 of all deaths are related to cardiovascular morbidity. है ना, बोल सकते हैं ना ऐसा 1/3 of all the deaths are related to cardiovascular morbidity, right? What are the risk factors for communicable disease, non-communicable disease? I think everybody knows there are behavioral factors, physiological factors and disease outcomes. Behavioral factors like tobacco, alcohol, unhealthy lifestyle, physical inactivity and ये सारा indoor air pollution, all these are behavioral factors. These are clubbed. बेटा ये question आ सकता है, which of the following is a behavioral factor, which of the following is a physiological risk factor? Physiological risk factor would be pertaining to your body. Like आपका अगर लाइफस्टाइल ठीक नहीं है तो बॉडी को क्या हो जाएगा? ओबेसिटी हो जाएगी. बॉडी को क्या हो जाएगा? हाइपरटेंशन हो जाएगी. बॉडी को क्या हो जाएगा? डायबिटीज़ हो जाएगी. ब्लड शुगर बढ़ जाएगा. लिपिड लेवल कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा एंड सो ऑन. And then you have is the disease outcome, and diseases को हम hypertension, cardiovascular disease, obesity and diabetes and diabesity, which is obesity with diabetes ऐसा बोलते हैं, right? So sir, for FMG one touch is enough. Rohit Gupta, yes, for FMG exam one touch जो book आई है that is absolutely enough. उसको please आप use करिए and I bet you, मेरे को लगता है कि मैंने जो कोशिश करी थी कि one touch PSM एक ऐसी book बने which will give you community medicine in just 35-40 pages. करने का जो मेरा back of the mind जो था that I have to finish in 35-40 pages. बड़ी book तो मुश्किल है बनानी, बट स्टिल छोटा करना इज ऑलवेज डिफिकल्ट. ट्राई टू अंडरस्टैंड कि इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू कंसाइज एंड टू स्टिल गिव इट टू यू सो दैट वो एग्जाम में रेप्लिकेट हो जाए. Okay, so I think One Touch PSM, this thing booklet is ideal for FMG students जिन्होंने तैयारी करी है and they want to revise, or if they have not done anything, if community medicine रह गया है आपका subject, so at least you can use that subject, use that book to cover this subject. इसमें पुराने high yield topics दिए हैं, tables आए हैं, images based questions हैं, high yield topics हैं, mnemonics थोड़े बहुत डाले हैं, so you would be able to see that, right? So FOMO Medico, I just flipped through PSM and found it truly amazing. Thank you so much, FOMO Medico. अच्छा चलो आगे चलते हैं. What is the update next? Update is National Program for Control of National Program for Prevention and Control of Non-Communicable Disease ने ये कुछ guidelines issue की हैं. What are the guidelines for diabetes? बेटा ये आ सकता है एग्जाम में. For diabetes, I think the screening test of choice is fasting blood glucose. स्क्रीनिंग टेस्ट ऑफ चॉइस के लिए डायबिटीज़ के लिए 126 सेम पुराने वैल्यूज़ हैं, बट येस इंपॉर्टेंट MCQ इज व्हाट इज़ द स्क्रीनिंग टेस्ट ऑफ चॉइस. What is the screening test of choice? It is fasting blood glucose. And next we also have the postprandial 2-hour postprandial blood glucose. That is the second level screening. But इसमें कहीं भी HbA1c नहीं है. मुझे पता है ideal test for diabetes screening is HbA1c. That is the ideal. But in Government of India, in public health centers, we do not have HbA1c facility at all the peripheral centers. तो peripheral centers में क्या हमारा screening test रहेगा? That will be fasting blood glucose. So values वही हैं 110 for impaired glucose tolerance, 110 to 126 impaired fasting glucose and so on. And diabetes is more than 126.
हाइपरटेंशन कब डायग्नोज करते हैं बेटा? फॉर हाइपरटेंशन डायग्नोजिंग देयर हैज़ टू बी मिनिमम 2 ब्लड प्रेशर रिकॉर्डिंग्स, 2 स्फिग्मोमैनोमीटर रिकॉर्डिंग। 2 स्फिग्मोमैनोमीटर रिकॉर्डिंग के ऊपर अगर सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर मोर देन 140 या डायस्टोलिक मोर देन 90 आ जाए, दैट इज टू बी लेबल्ड एज हाइपरटेंशन ऑन 2 रिकॉर्डिंग्स। अब बात आती है कि सेकेंड रिकॉर्डिंग कब करनी है, व्हेन टू डू सेकेंड रिकॉर्डिंग। सेकेंड रिकॉर्डिंग अगर इफ द ब्लड प्रेशर इज 140 to 160 सिस्टोलिक या डायस्टोलिक इज 90 to 100, you do the second recording on any other day apart from day 1। जिस दिन आपने चेक किया, any other day you call the patient tomorrow or day after, तब दोबारा चेक करो। if the BP is more than 160 on the same day, हाँ, पेशेंट का BP 168 आ गया, 170 आ गया, कुछ भी आ गया, और the diastolic is more than 100, then you do the second recording on the same day after few minutes or hours। आफ्टर गिविंग रेस्ट टू द पेशेंट आप दोबारा करिए। सो बस यही एक छोटा सा गाइडलाइन इंपॉर्टेंट है। सो इट इज 2 रिकॉर्डिंग्स बीपी मोर देन 140 इज टेकन एज हाइपरटेंशन। 140 to 160 अगले दिन कभी भी बुला लो। 160 से ऊपर है तो भैया आज ही करना है और आज ही ट्रीटमेंट शुरू करना है। सर 3rd ईयर में PSM में किया था बट अब नेक्स्ट के लिए रिवाइज कैसे करें? One touch PSM, rapid revision books, all these you have lot of sources, Devesh Mehta, so you can use them। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट है बेटा फॉर क्राइटेरिया फॉर डायग्नोजिंग डायबिटीज एंड हाइपरटेंशन। नेक्स्ट इज NCD स्क्रीनिंग इन पेरिफेरल हेल्थ सेंटर्स। जो भी सब सेंटर्स हैं या जो भी वट एवर आर आवर PHCs, वहाँ पे वी हैव डिफरेंट अरेंजमेंट्स। 2-3 इंपॉर्टेंट चीज़ें, नथिंग वेरी हाई फाई। हाइपरटेंशन के लिए बेटा एट द सब सेंटर, okay, there will be sphygmomanometer at a PHC level। sphygmomanometer तो होगा, प्लस साथ में there is also option for serum creatinine। MCQ serum creatinine भी करते हैं PHCs में whenever we see a patient of hypertension। first thing। second, डायबिटीज़ में तो कुछ खास चेंज नहीं है। डायबिटीज़ फास्टिंग PP is done at सब सेंटर एंड फास्टिंग PP is done at PHC level also। इंपॉर्टेंट आता है सर्वाइकल कैंसर स्क्रीनिंग। सर्वाइकल कैंसर स्क्रीनिंग प्लीज याद रखें, व्हाट इज द स्क्रीनिंग टेस्ट ऑफ चॉइस बेटा? स्क्रीनिंग टेस्ट ऑफ चॉइस, स्क्रीनिंग टेस्ट of choice for cervical cancer is not pap smear, it is VIA, visual inspection with acetic acid। pap smear एक उस फैसिलिटी में होगा wherever we have gynecologist and obstetrician specialist facility available। so pap smear is usually done from CHC या district hospital onwards। at peripheral centers we have visual inspection with acetic acid, nothing much, and those are just the peripheral systems that we have। Third update, that's a small update. It's actually not an update. It's just you can say propaganda, you can say, or health education to the public कि आपको एग्जाम में क्वेश्चन किसके ऊपर आ सकता है बेटा? एग्जाम में क्वेश्चन इस दफ़ा आयुष्मान भारत के ऊपर आएगा आपको। सो मेक श्योर यू स्टडी आयुष्मान भारत, जिसके 2 पार्ट्स हैं। आई थिंक आई हैव डिस्कस्ड इन मेनी वीडियोस। मैरो जिन स्टूडेंट्स ने किया उसमें पूरा हमारा एक टॉपिक डिस्कशन है आयुष्मान भारत के ऊपर। आयुष्मान भारत के 2 आर्म्स होते हैं। वन इज CPHC, कॉम्प्रिहेंसिव प्राइमरी हेल्थ केयर सिस्टम, एंड अनदर इज हेल्थ इंश्योरेंस सिस्टम। हेल्थ इंश्योरेंस में आई थिंक एवरीबडी नोज 5 लाख रुपीज टू एवरी फैमिली, 5 करोड़ पॉपुलेशन, 5 करोड़ फैमिलीज है, 10 करोड़ पॉपुलेशन है, एंड सो ऑन। So so it was 10 crore population and 50 crore 10 crore families and 50 crore population। CPHC stands for comprehensive primary healthcare system, जहाँ पे we started with the health and wellness centers। this is what I expect in your exam, this is a 5-star topic, health and wellness centers। so from primary healthcare, Ayushman Bharat 1.65 health and wellness centers have been established across country। next is for secondary structure, we again have PMJ, जहाँ पे 5 लाख रुपीस का कवर मिलता है टू ऑल द फैमिलीज, टू 10 करोड़ फैमिलीज, 50 करोड़ पॉपुलेशन। एंड फॉर रिलायबल मेडिसिन एंड रिलायबल इम्प्लांट्स एंड जेनरिक मेडिसिन एक स्कीम शुरू हुई थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। आई थिंक एवरीबडी नोज अबाउट इट, दैट इज जन औषधि केंद्र। जन औषधि केंद्र, दीज आर फॉर जेनरिक मेडिसिन टू गिव द मेडिसिन, टू मेक द मेडिसिन अवेलेबल एट अ लोअर कॉस्ट। ओके, so these were regarding the small updates। फटाफट से let's discuss some of the previous year questions। previous year questions। यश देसाई, are you setting the paper for FMG? अगर मैं सेट कर रहा होता तो मैं यहाँ पे आपको क्वेश्चन बता रहा होता। खुद सोचो यार, क्या अब पेपर कौन लोग सेट करते हैं? पेपर भी
मुझ जैसे ही कोई लोग होंगे, मेरे कोई हो सकता है जानकार होंगे. सो ऐसा नहीं है कि आई सेट द पेपर, आई डू नॉट सेट द पेपर. ऑफ कोर्स वी हैव सीनियर्स वो वर्किंग फॉर इट, एंड ऑल द प्रोफेसर लेवल दे आर सेटिंग द पेपर, एंड जो पुराने HODs हैं वो लोग करते हैं सेट. बट उनको कौन करके देता है? वो तो हम जैसे बच्चे लोग ही करके देंगे. राइम, व्हाट इज राइम? राइम स्टैंड्स फॉर वर्बल एटॉप्सी. ये आपके लिए क्वेश्चन है बेटा, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर्स. राइम इज फॉर वर्बल एटॉप्सी, मेथड ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग, प्रमोटिंग फैमिली प्लानिंग, या टू प्रोवाइड इमरजेंसी चाइल्ड केयर. क्या बोलना चाहते हो? व्हाट इज राइम? राइम, राइम, एब्सोल्युटली करेक्ट आकांक्षा यादव, वेरी नाइस. राइम, इट्स राइम स्टैंड्स फॉर रूटीन, रिलायबल, रिप्रेजेंटेटिव, रीसैम्पल्ड. ये सारा कुछ आ रहा है. रूटीन, रिलायबल, रिप्रेजेंटेटिव एंड रीसैम्पल्ड. हाउसहोल्ड, इंटरव्यू ऑफ मोर्टालिटी एंड मेडिकल इवेल्युएशन. RHIME, that is what is rhyme. It is a method for verbal autopsy. Verbal autopsy, it is a method for verbal autopsy. Please note, rhyme जो है ये basically MMR के causes के लिए बात करता है. maternal mortality ratio, MMR stands for maternal mortality ratio. What is the current maternal mortality ratio? That is 97. What is the target we have to achieve? We have to achieve less than 70 by year 2030. We have to achieve less than 70 by year 2030. Next is, you also should know neonatal mortality rate. Neonatal mortality rate कितनी है? It is 28. It is 20. Neonatal mortality is 20 per 1,000 live birth. Then we have infant mortality rate, that is 28 per 1,000 live births. And then we have under 5 mortality rate, that is 30 per 1,000 live births. So these are the important things. Under 5 का target कितना है? We should achieve less than 25 by year 2030. Neonatal mortality should be less than 12 by year 2030. So these are the targets if you want to remember, and these are some of the important demographic data which you would like to remember for your exam. चलो फटाफट से अगले क्वेश्चन पे चलते हैं. The gap in time between the onset of the primary case and secondary case. क्या बोलना चाहते हो? What is the gap in time between the onset of the primary case and the secondary case? What is this? Serial interval, incubation period, latent period, या generation time? What do you think is the best answer? क्या बोलना चाहते हो? I'm waiting for your answers. Everybody should participate, right? I'm waiting for your answers. क्या बोलते हो? What do you think is the best answer for this question? The gap in between the onset of the primary case and secondary case is called as serial interval, incubation period, latent period, या generation time. What do you think is the correct answer? Beta, it is the gap between the primary case and secondary case. What is primary case? Primary case is always the first case in community. First case in community is called as the primary case. First case in the community is called as the primary case. ये पेंसिल भी ना पुरानी हो गई है, पेंसिल, गरीब बंदे हैं. So the first case in the community is called as the primary case. And what is secondary cases? Secondary cases are the subsequent cases which arise from the primary case. So the first case in the community, that is primary case, subsequent cases, that is secondary case, and the gap in time between them is called as serial interval. What is the best answer? It is serial interval. Very nice, Akansha Yadav, Rohit Gupta, Yash Desai. Very nice, Rohit Gupta. It is serial interval. Serial interval is the time between primary case and the secondary case. What do you mean by the index case? फटाफट से लिखो chat box में. What do you mean by the index case? बेटा index case क्या होता है? Index case, how is it different from the primary case? Primary case होता है first case in the community. Index case होता है the first observed case. It is the first case which was observed by the doctor or the nurse or the health professional. That is what is the primary case, and that is what is the index case. कुछ एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं वो टाइम डिफरेंस को लेके. द टाइम डिफरेंस ऑफ एंट्री ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड फर्स्ट साइन एंड सिम्टम इज नोन एज. व्हाट डू यू थिंक? फिल इन द ब्लैंक. फटाफट से क्वेश्चन नंबर 1. व्हाट डू यू थिंक? 1 डॉट आगे लिख के चैट बॉक्स में लिखिए. व्हाट डू यू थिंक इज द फर्स्ट आंसर?
the entry of organism and the first sign and symptom, that is called as the incubation period. Very nice, that is called as the incubation period. It is called as incubation period. Next in line, entry of organism and dash is the generation time. क्या होगा generation time? How is it different from the incubation time? Incubation period is the entry of organism and the first sign. Entry of organism and the maximum communicability. Maximum communicability, shabash, very nice. Incubation period is entry and first sign and symptom, entry and maximum communicability, that is generation time. फिर कई दफ़ा सवाल पूछते हैं व्हाट इज आइसोलेशन एंड व्हाट इज क्वारंटीन. आइसोलेशन और क्वारंटीन ये दोनों कौन से लेवल ऑफ प्रिवेंशन है? ये दोनों याद रखें, दीज आर बोथ प्राइमरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन. प्राइमरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन है ये दोनों, आइसोलेशन एंड क्वारंटीन. आइसोलेशन बेटा इट इज डन फॉर केसेस एंड क्वारंटीन इज डन फॉर हेल्दी सब्जेक्ट्स. हेल्दी सब्जेक्ट्स, अपरेंटली हेल्दी सब्जेक्ट्स. तो सवाल आता है इंक्यूबेशन पीरियड कितनी देर के लिए होता है? इंक्यूबेशन पीरियड कब तक कर सकते हैं? लिखो फटाफट से चैट बॉक्स में इंक्यूबेशन पीरियड. व्हाट इज द टाइम फॉर इंक्यूबेशन, फॉर आइसोलेशन, नॉट इंक्यूबेशन. आइसोलेशन कब तक कर सकते हैं? इट इज डन फॉर द मैक्सिमम, आइसोलेशन इज डन फॉर द मैक्सिमम व्हाट? Communicable period. It is done for the maximum communicable period. And quarantine हम कब तक कर सकते हैं? Till what time we should do quarantine? बेटा please write down. Quarantine कब तक कर सकते हैं? I'm waiting for your answers. शाबाश बेटा. Quarantine is done for the maximum. Please write down. It is done for the maximum. Very nice, very nice. It is done for the maximum incubation period. It is done for the maximum incubation period. तो ये एक छोटा सा फर्क होता है between quarantine and between isolation. Isolation and quarantine, they both are done as primary level of prevention. And isolation किसके लिए करते हैं? maximum communicable. बोलो मेरे साथ, isolation maximum communicable, quarantine is for maximum incubation period. Quarantine healthy subjects के लिए होता है, isolation cases के लिए होता है. Both are level of primary level of prevention. Next in line, let's go to the next MCQ. All of the following is the proxy measure for incubation period except. गलत वाला बताना है. All are proxy measures for incubation period. मतलब incubation period क्या था? अभी आपने पढ़ा, that is the entry till the first sign and symptom. So all are proxy measures for incubation, मतलब उससे मिलता जुलता है except. Serial interval, it is the difference between primary case and secondary case. Yes, it is almost equal to the incubation period. Period of communicability कुछ और होता है. Latent period क्या होता है? Latent period is entry or the start of the organism or the start of the risk factor till the first sign and symptom. Usually ये non-communicable disease में हम use करते हैं. It is nothing but incubation period of the non-communicable disease because ये बहुत लंबा होता है. जैसे कैंसर है, हाइपरटेंशन है, the start of risk factor and the onset of sign symptom वो बहुत दूर है. So we say latent period for non-communicable disease. Yes, ये भी incubation period से मिलता है. Generation time, entry of organism till the maximum till the maximum communicability. Yes, ये भी incubation period से ही मिलता है. Why? It is also called as external incubation period. It is the extrinsic or external incubation period. It is also proxy. ये भी कुछ कुछ मिलता है incubation period से. Period of communicability अलग होता है. Period of communicability पहले भी हो सकता है, बाद में भी तो हो सकता है ना. Period of like measles आप जानते होगे. It is communicable from 2 to 3 days before, 4-5 days before and 4-5 days after onset of rash. तो rash शुरू हुआ उससे पहले भी कम्युनिकेबल है और बाद में भी कम्युनिकेबल है. सो ये टोटल हुआ ना पीरियड ऑफ कम्युनिकेबिलिटी. आर यू गेटिंग इट? सो दिस टोटल इज पीरियड ऑफ कम्युनिकेबिलिटी. प्लीज नोट, पीरियड ऑफ कम्युनिकेबिलिटी इज नॉट इंक्यूबेशन पीरियड. इंक्यूबेशन पीरियड तो फर्स्ट साइन एंड सिम्टम पे खत्म होगी ना बात, बट उसके आगे भी तो चल रहा है. So please note that the best answer you would like to mark over here, the best answer should be period of communicability. The time lag between the first possible detection and usual time of diagnosis. ये भी क्वेश्चन आता है. बहुत सारे टाइम के ऊपर हमने बात किया. प्लीज़ नोट, हमने इंक्यूबेशन पीरियड बात किया, जनरेशन टाइम बात किया, हमने सीरियल इंटरवल बात किया, हमने आइसोलेशन, क्वारंटीन. अब एक और आया, इट इज़ द फर्स्ट पॉसिबल डिटेक्शन एंड यूजुअल टाइम ऑफ डायग्नोसिस. बेटा याद रखना, दो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ. द फर्स्ट पॉसिबल पॉइंट ऑफ डायग्नोसिस, फर्स्ट पॉसिबल पॉइंट ऑफ डायग्नोसिस किसी भी बीमारी का, एंड द क्रिटिकल
पॉइंट ऑफ डायग्नोसिस किसी भी बीमारी का, इस टाइम डिफरेंस को व्हाट डू वी कॉल इट एज? याद है, एस फॉर स्क्रीनिंग, एस फॉर शॉर्ट, दिस इज कॉल्ड एज स्क्रीनिंग टाइम. This is called as screening time. I have discussed in the chapter on screening of disease, जहाँ पे ये टॉपिक डिस्कस हुआ है. अगर आपको समझ आ गया, अगर आपको याद है, बहुत अच्छी बात है. नहीं याद तो इसको रट लो, एग्जाम में तो यही पूछेंगे. सो फर्स्ट पॉसिबल पॉइंट ऑफ डायग्नोसिस एंड यूजुअल पॉइंट ऑफ डायग्नोसिस. First possible point of diagnosis and the usual point of diagnosis, what is this called as? This is called as lead time. बेटा दो टाइम जोन्स होते हैं स्क्रीनिंग ऑफ डिजीज में. The time difference between the first possible point and the critical point, that is shorter distance screening time. First possible and the usual point, longer distance lead time. Short distance screening time, long distance lead time. याद रखो, short distance screening time, long distance lead time. First possible point of diagnosis and the critical point of diagnosis, that is called as screening time. First possible point and the usual point of diagnosis, that is called as lead time. So I think the time difference between the first possible point of detection and the usual point of diagnosis, that is called as lead time. Very nice, Rohit Gupta, Kansha, Fomo, Parvati, Nandita Kaushal, absolutely correct. Very nice, so nice, bache. Yes, you're doing all very great. That's so nice of you. Let's go to the next MCQ. Giving rabies immunoglobulin within 24 hours of dog bite. What is this? Secondary prevention, high risk strategy, primordial prevention, primary prevention. क्या बोलना चाहते हो? What do you think is this? Is the answer for this? I'm waiting for your answers. Giving rabies immunoglobulin within 24 hours of dog bite. What do you think is this? Secondary prevention, high risk strategy, primordial prevention, primary prevention. Giving rabies immunoglobulin within 24 hours of dog bite. What do you think is the best answer for this? फटाफट से लिखो अपने चैट बॉक्स में. व्हाट डू यू थिंक इज द बेस्ट आंसर फॉर दिस? व्हाट डू यू थिंक इज द बेस्ट आंसर? गिविंग रेबीज इम्यूनोग्लोबुलिन विद इन 24 आवर्स ऑफ अ डॉग बाइट. प्लीज नोट, या आई थिंक यहीं पे जोर का झटका धीरे से लगा, सब लोग इसको लगेंगे सेकेंडरी प्रिवेंशन, बट ये गलत हो गया आंसर आप सबका. सेकेंडरी प्रिवेंशन लिखा तो बड़ी जोर से था सबने. आई वोंट से द नेम्स. अपना अपना आंसर रिट्रैक्ट कर लो. शाबाश. मेरा एक ही दोस्त है यहाँ पे, मोहम्मद जुनैद. वेरी नाइस, आई एम सो प्राउड ऑफ यू. क्यों बोले भाई प्राइमरी प्रिवेंशन? मोहम्मद जुनैद साहब क्यों बोले आप प्राइमरी प्रिवेंशन? कुछ थोड़ा इसके ऊपर रोशनी डालो, लिख के देखो चैट बॉक्स में क्यों बोल रहे हो आप प्राइमरी प्रिवेंशन, सेकेंडरी क्यों नहीं है? आपको याद होगा दीज आर द लेवल्स ऑफ प्रिवेंशन. मैंने आई थिंक ऑलमोस्ट हर क्लास में, इफ़ यू हैव अटेंडेड माय ऑफलाइन क्लासेस, वहाँ पे वी स्पेंड 30-40 मिनट्स, 1 घंटा तक मैं बिताता हूँ इस टॉपिक के ऊपर, लेवल्स ऑफ प्रिवेंशन. लेवल्स ऑफ प्रिवेंशन, इट इज़ 100% आंसर. ये क्वेश्चन आता ही आता है. सो लेवल्स ऑफ प्रिवेंशन यू ऑलरेडी नो, देयर आर प्राइमोडियल, प्राइमरी, सेकेंडरी या टर्शरी. व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज रिस्क फैक्टर होता है फिर डिजीज, कॉम्प्लिकेशन एंड देन देयर इज डिसेबिलिटी और डेथ. So if you're preventing, ध्यान से सुनना, if you're preventing the risk factor उगने से, that is what is called as the primordial prevention. अगर आप risk factor है, आप बीमारी रोक रहे हो, that is primary prevention. अगर आप बीमारी है, complication रोक रहे हो, that is secondary. And tertiary is complication को रोकना. वापस क्वेश्चन पे आओ, come back to the question. So I'll repeat again. If the risk factor is there and you prevent the disease, that is called as a primary prevention. But if the disease is there and you're preventing the complication, that is called as secondary prevention. Coming back to the story. So, आपने rabies immunoglobulin दिया within 24 hours of dog bite. What is the disease you are? आप किस बीमारी से डर रहे हो? What are you scared of? आप किस से डर रहे हो? What are you scared of? What है? You're scared of rabies. So, what is rabies? Rabies is the disease. So, you are giving something. क्या दे रहे हो? रेबीज इम्यूनोग्लोबुलिन. यू आर गिविंग रेबीज इम्यूनोग्लोबुलिन टू प्रिवेंट व्हाट? टू प्रिवेंट रेबीज. सो क्या हुआ ये? प्राइमरी या सेकेंडरी? बोलो मेरे साथ. शाबाश, जय माता की. दिस इज प्राइमरी प्रिवेंशन, दिस इज नॉट सेकेंडरी प्रिवेंशन. ये एक गलती है जो भारत देश में 95% स्टूडेंट करता ही करता है, जस्ट बिकॉज के कुछ लोग, कुछ फैकल्टीज या कुछ किताबें या कुछ प्रोफेसर्स उस तरीके से आपको शायद रिलेट ना कर पाए ये टॉपिक या समझा ना पाए. सो आपने रट रट के गलतियां करनी है. सो प्लीज नोट दैट व्हाट इज गिविंग रेबीज इम्यूनोग्लोबुलिन. गिविंग रेबीज इम्यूनोग्लोबुलिन, व्हाट लेवल ऑफ प्रिवेंशन? रेबीज इम्यूनोग्लोबुलिन, इट इज अ प्राइमरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन. व्हाई डू आई से इट इज अ प्राइमरी लेवल? बिकॉज यू आर गोइंग टू प्रिवेंट व्हाट? यू आर गोइंग टू प्रिवेंट द डिजीज. यू आर स्केर्ड ऑफ रेबीज. सो लगा जोर का झटका, धीरे से लगे.
सो प्लीज़ याद रखो, ये आपको मैं एक टेबल दे रहा हूँ. All those students who are going to appear for your FMG exam, this is a 100% strike rate table. ये टेबल का स्क्रीनशॉट ले लो एंड ये टेबल को पढ़ के ज़रूर जाना. एग्जाम्पल्स ऑफ प्राइमोडियल, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी. वैक्सीन्स कोई पूछे, इम्यूनाइजेशन पूछे, प्रोफाइलैक्सिस, प्रिजम्पटिव स्क्रीनिंग, ऑल दीज आर प्राइमरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन. एनी अर्ली डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट, TB treatment, anything, they are all secondary level of prevention. So tertiary prevention is disability limitation, rehabilitation, transplant surgery and prosthesis. आकाश कह रहे हैं प्लीज रिपीट वंस मोर. भैया मैंने बहुत रिपीट किया है दैट इफ यू प्रिवेंट अ डिजीज, ध्यान से सुनना, इफ द रिस्क फैक्टर इज देयर एंड यू प्रिवेंट द डिजीज, कौन सा लेवल ऑफ प्रिवेंशन? प्राइमरी प्रिवेंशन. इफ द डिजीज इज देयर एंड यू प्रिवेंट द कॉम्प्लिकेशन, डिजीज है बंदे को एंड यू प्रिवेंट द कॉम्प्लिकेशन, व्हाट लेवल ऑफ प्रिवेंशन? दिस इज सेकेंडरी प्रिवेंशन, right? FOMO medico, but sir, hasn't the virus already? No, we don't know if the virus was there or not. This is just a potential dog bite. We don't know it was rabies dog bite, and we don't even know कि वो rabies अंदर गया कि नहीं गया. हम बीमारी को रोक रहे हैं, रिस्क फैक्टर है, रिस्क फैक्टर इज द वायरस, राइट? सो अगर रिस्क फैक्टर है बट बीमारी नहीं ना, यू आर प्रिवेंटिंग रेबीज. Okay, FOMO medico, please note, immunoglobulin is not a treatment for rabies. Rabies हो जाए, there is no treatment, there is no cure. Rabies का prevention होता है, and that is what is primary prevention. That is where everybody gets confused. So इसको बांध लो अपने जहन में, इसको अच्छी तरह आप अपने जहन में बांधिए बात को, that it is a primary prevention, it is not secondary prevention, right? So coming back to the story, giving rabies immunoglobulin within 24 hours of dog bite. Giving rabies immunoglobulin within 24 hours of dog bite. That is, what is the best answer? Googly question. The answer is primary prevention. It is not secondary prevention. It is primary prevention. रख भरोसा खुद पर, क्यों ढूंढता है फरिश्ते? सुनो ध्यान से, रख भरोसा खुद पर, रख भरोसा खुद पर, क्यों ढूंढता है फरिश्ते? पंछियों के पास कहाँ होते हैं नक्शे, फिर भी वो ढूंढ लेते हैं रास्ते. ध्यान रहे, अपना रास्ता खुद ढूंढना है, एंड वट एवर कॉन्सेप्ट्स यू आर गेटिंग, यू हैव टू गेट देम टुडे, यू हैव टू गेट देम टुमारो, एंड यू हैव टू मेक देम वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट्स फॉर योर सेल्फ. ओके, सो याद रहे ये बात कि पंछियों के पास कहाँ होते हैं नक्शे, फिर भी वो ढूंढ लेते हैं रास्ते. याद रखें. एंड लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट MCQ. अ पब्लिक हेल्थ फिजिशियन wants to study the load of hypertension in Bangalore to establish the special screening and treatment services. What design is most useful for this? What do you think? The physician wants to study the load of hypertension. A load of hypertension क्या होता है? Load of hypertension, you want to study the burden of hypertension. In fact, it should not be the load. You want to study the burden of hypertension. So a public health physician wants to study the burden of hypertension in Bangalore to establish special screening and treatment services. What design is most useful over here? Cross-section study, cohort study, case control study, or experimental design? What do you want to say? फटाफट से 5-6 क्वेश्चंस हैं. वी आर गोइंग टू वेरी क्विकली रैप अप टुडेज सेशन. मेरे को कहीं पे जाना है तो इसलिए आज हमने जल्दी सेशन किया. नॉर्मली आई डू इट एट 9 PM in the night, बट आज कहीं पे हमने बाहर जाना है. सो फटाफट से करो, भूख लग रही है मेरे को. अ पब्लिक हेल्थ फिजिशियन वांट्स टू स्टडी द लोड ऑफ हाइपरटेंशन इन बैंगलोर टू स्टडी स्पेशल स्क्रीनिंग एंड ट्रीटमेंट सर्विसेज. व्हाट डिजाइन इज मोस्ट यूजफुल ओवर हियर? एब्सोल्युटली सही आंसर है सब बच्चों का. वेरी नाइस. इट इज़ अ क्रॉस सेक्शन स्टडी. 2-4 बातें इसको याद रख लो, जहन में डाल लो, ये आपको एग्जाम में आएगा. दिस इज ऑलमोस्ट 100% स्ट्राइक रेट क्वेश्चन. इट इज़ अ 5-star MCQ टेबल पॉइंट फॉर यू. ये मैं स्क्रीन पे जो अभी लिख रहा हूँ. अगर एग्जाम में बेटा आपको कोई कहे बर्डन ढूंढना है बीमारी का, यू वांट टू फाइंड द बर्डन ऑफ डिजीज, यू वांट टू फाइंड द प्रेवलेंस ऑफ डिजीज, और देयर वाज अ सर्वे व्हिच वाज डन इन द टोटल पॉपुलेशन, आंसर हैज टू बी क्रॉस sectional study. Answer has to be a cross sectional study. In case somebody tells you that there was a rare disease, study of choice for a rare disease, study of choice for a rare disease, or a retrospective study was done, or the odds ratio was calculated, or if the study says that recall bias was there. अगर इनमें से कुछ भी आ जाए, मेरे को नहीं पता एग्जामिनर क्या पूछेगा क्योंकि मैंने एग्जाम नहीं सेट किया है. सो इन केस कुछ भी आ जाए, सो नाउ व्हाट आर यू गोइंग टू मार्क? इट इज अ केस
control study. It is a case control study, right? Last MCQ, another point, rare risk factors, rare disease नहीं मैं बोल रहा, rare risk factors, prospective study, long term analysis, follow up किया, incidence ढूंढा, relative risk ढूंढा, या फिर वो लिख दें यहाँ पे attributable risk ढूंढा, attributable risk was found out. What is the study? यहाँ पे कौन सी स्टडी आप मार्क करेंगे? It is a typical example of a cohort study design. It is a typical example of a cohort studies design. So make sure that you're getting all this right. And ये एक 100% हर एग्जाम में पूछा जाता है. ये आपको कीवर्ड्स देंगे, आपको एग्जाम में वो स्टडी गेस करनी है. फोमो मेडिको नेस्टेड केस कंट्रोल इन INI सेट. यस, इट वाज नेस्टेड केस कंट्रोल विच वाज आस्क्ड इन INI सेट एग्जाम. But INI set में epidemiology is way and biostats is way more deeper. FMG के लिए अभी हम prepare कर रहे हैं. So let's keep it simple. Let's keep exam में क्या आने वाला है. So exam में जो आने वाला है वो आपको आपके सामने यहाँ पे पेश कर रहा हूँ. ये बेटा एक बहुत ही फेवरेट टेबल है. ये फेवरेट टेबल इसलिए क्योंकि ये मैंने बनाया तो 3-4 साल पहले ही था. Very recently I made that. But इस टेबल में से हर साल 100% एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं. So this table, what is the cross-section study design, ecological, case control, cohort, all these are type of analytical studies. मैं इन सारी analytical studies को एक ही table में compare करता हूँ. So also known as example, unit of study, ये बहुत दफ़ा पूछा है. Population is the unit of study in which of the following studies? It is ecological study, बाकी सबकी individual होता है. You start your study with total population, disease, non-disease, risk factor, no risk factor, and so on. What is the use? This has been asked so many thousands of times. Prevalence के लिए कौन सी? अभी जो क्वेश्चन था वो भी तो यही था. Prevalence के लिए which study is the best study? It is cross-section study. You want to find out odds ratio? It is case control study. Risk ratio, attributable risk, it is case control study. Correlation के ऊपर I think recently NEET exam में क्वेश्चन था. Correlation is also ecological. Bias कौन सा किस में होता है? Rare disease study of choice is case control study. Rare risk factor study of choice is cohort study. Long time taking, less time taking. This is a summary of the epidemiological study designs जो आपको एग्जाम के लिए याद रखनी है. So let's go back to the question. A public health physician wants to find the burden of hypertension. The burden के लिए direct answer है कौन सी study करेंगे जी? हम cross section study करेंगे. Let's go to the next MCQ. फटाफट से लिखो चैट बॉक्स में. व्हाट डू यू थिंक इज द बेस्ट आंसर? इन अ पॉपुलेशन इफ द नंबर ऑफ अंडर 5 चिल्ड्रन हैव एन एवरेज ऑफ 2 अटैक्स ऑफ डायरिया पर ईयर. ये क्या चीज हुई? 2 अटैक्स ऑफ डायरिया पर ईयर, मॉर्बिडिटी रेट, एज एडजस्टेड मोर्टैलिटी रेट, सेकेंडरी अटैक रेट या चाइल्ड मोर्टैलिटी रेट. व्हाट डू यू थिंक इज द बेस्ट आंसर फॉर दिस वन? सो व्हाट डू यू थिंक इज द बेस्ट आंसर फॉर दिस वन? In a population, if the number of under 5 children have averaged 2 attacks of diarrhea in a year, this is known as secondary attack rate, morbidity rate, age adjusted mortality rate या child mortality. क्या बोलना चाहते हो? What is the best answer? अगर एक population है यहाँ पे, if the number of under 5 children have 2 attacks of diarrhea in a year, so ये डायरिया की बात हो रही है. This is 2 attacks of diarrhea. Secondary attack rate, this is not a secondary attack rate. Why? Because what is secondary attack rate? It is number of secondary cases arising from the primary case. Age adjusted mortality तो नहीं है, deaths की बात नहीं हो रही, child mortality की बात नहीं हो रही. So it is a very simple answer. The answer over here is morbidity rate. बेटा morbidity क्या होता है? Morbidity means sickness. सिकनेस को हम इलनेस को मॉर्बिडिटी कहते हैं. मॉर्बिडिटी रेट इज लाइक नंबर ऑफ डिजीजेस, नंबर ऑफ अटैक्स और डायरिया और वट एवर. ओके, चलो लेट्स गो टू द नेक्स्ट MCQ. इन एन आउटब्रेक ऑफ डेंगी हेमोरेजिक फीवर इन अ स्मॉल कम्युनिटी लास्ट ईयर 25 केसेज हैव अकर्ड, आउट ऑफ विच 5 हैव डाइड. सो 25 केसेज हुए, आउट ऑफ विच 5 हैव अनफॉर्चुनेटली डाइड. टोटल पॉपुलेशन इज 20,000. टोटल पॉपुलेशन इज 20,000. व्हाट विल बी द केस फैटालिटी रेट? आपको क्या ढूंढना है? केस फैटालिटी रेट. केस फैटालिटी रेट ढूंढना है. सो फटाफट से देखो, कॉपी पेंसिल है या नहीं भी है, मेंटल मैथ्स कर सकते हो तब करो. सो आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर्स. डालो इसको. सो व्हाट डू यू थिंक? व्हाट इज द बेस्ट आंसर? टोटल पॉपुलेशन इज 20,000. केस फैटालिटी रेट निकालना है. बेटा, I think most of you already know what is case fatality rate. Case fatality rate, it is given by the formula number of deaths due to, DT मैंने लिखा है due to a disease divided by the total number of cases
of same disease multiplied by 100. That is what is a case fatality rate. It is number of deaths due to a certain disease divided by the total cases of the same disease multiplied by 100. So answer is not 25 by 20,000 beta. जो आप कर रहे हो, what you are saying, what is the best answer? It is number of deaths. तो deaths कितनी हुई? 5 लोग death हुई ना. So number of deaths तो 5 हुई. Total cases कितने हुए? 25 cases हुए. So what is the best answer? 5 by 25 into 100. That is the best answer. That is case fatality rate. जो आपने बताया मेरे को बच्चे, what you have told by mistake. That's okay. ये गलतियां ही तो अपने को और अच्छा बनाएंगी, है ना? So what happens over here is, आपने मुझे बताया total cases divided by the population. So total number of cases divided by the population. Total cases कितने हुए divided by the population? ये तो burden हो गया ना, ये तो prevalence हो गया ना. This is not the case fatality rate. Case fatality rate is total deaths divided by the total cases. So that is what is important for us to know. It is 5 by 25. Atul Saini, retrospective or prospective study or nested case control. क्या करूं इसका? मतलब what do I do? Retrospective is, beta, retrospective studies, these are case control studies. Prospective studies, these are follow-up, these are cohort studies. Nested case control, it is a type of a cohort study. इसमें भी follow-up होता है, but there is element of case control also. So बस यही exam के लिए याद रखना है. That's all that you need to remember. Coming back to this question, sorry. Outbreak of dengue. So what is the best answer? The best answer अभी हमने calculate किया. It is 5 by 25. Okay. So this thing has already been explained बेटा. This is इसका ना आप फोटो खींच लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप. डायरेक्ट MCQs आते हैं. आई डोंट, ये जो सेशन है ये हमारा रैपिड रिवीजन काइंड ऑफ सेशन है. यहाँ पे इफ़ यू स्पेंड लॉट ऑफ टाइम इन एक्सप्लेनिंग इन डेप्थ द कॉन्सेप्ट्स तो वो टाइम ज़्यादा लग जाएगा. बट येस, एग्जाम के लिए आपको क्या रखना है? एग्जाम के लिए जो आपको रखना है वो ये रहा. एग्जाम के लिए अपने को रटना है कि केस कंट्रोल स्टडी कौन सी होती है भैया? केस कंट्रोल स्टडी होती है रेट्रोस्पेक्टिव स्टडी. उसमें टाइम में आप पीछे जाते हैं. आज डिजीज है, यू टेक पीपल विद डिजीज, उनसे आप पूछते हैं भैया आपने ये तो नहीं किया, ये तो नहीं हुआ. नेक्स्ट इज कोहॉर्ट स्टडीज. व्हाट आर कोहॉर्ट स्टडीज? कोहॉर्ट स्टडीज दीज आर प्रोस्पेक्टिव लुकिंग स्टडीज. जो आप पूछ रहे हैं नेस्टेड केस कंट्रोल, नेस्टेड केस कंट्रोल, नेस्टेड केस कंट्रोल. अगर आप इन केस यू आर अपेयरिंग फॉर FMG एग्जाम, आई डोंट थिंक कोई पूछेगा. ये इतना ज़्यादा पूछा नहीं जाएगा FMG एग्जाम में. नेस्टेड केस कंट्रोल, इट इज़ अ टाइप ऑफ कोहॉर्ट स्टडी. बस अभी के लिए इतना याद रखो, इट इज़ अ टाइप ऑफ कोहॉर्ट स्टडी. इसमें केस कंट्रोल इज विद इन द टाइप ऑफ विद इन अ कोहॉर्ट स्टडी. बस इसको नेस्टेड केस कंट्रोल कहते हैं, राइट. सो जो मोटा मोटा आपको याद रखना है, दिस इज व्हाट यू हैव टू रिमेंबर फॉर योर एग्जाम. लेट्स गो टू द नेक्स्ट MCQ. Direct standardization is used to compare the mortality rates between two countries. This is done because of difference in what? Direct standardization is done to compare the mortality rates between two countries. This is done because of differences in किस चीज में difference है? Ankit Gurjar, namaskar, very good evening. Welcome to the session, Ankit. So direct standardization is to compare what? It is to compare the mortality rates between two countries because of difference in cause of death, denominator, age distribution या numerator. क्या बोलना चाहते हो? फटाफट से लिखो. It is because of change in the age distribution. Absolutely correct, Akansha. That's so nice of you. Very nice. I'm so proud of you, beta. So keep on studying and keep on doing the hard work. FOMO medical showers मेरे शेर आप ही हो जो छा रहे हो आज. दैट इज एज डिस्ट्रीब्यूशन. वेरी नाइस रेशमा, सो नाइस ऑफ यू, वेरी नाइस. इट इज बिकॉज ऑफ डिफरेंस इन द एज डिस्ट्रीब्यूशन. दो चार बातें अबाउट डायरेक्ट स्टैंडर्डाइजेशन, इनडायरेक्ट स्टैंडर्डाइजेशन. जो स्टैंडर्डाइजेशन टर्म होती है, दैट इज टू कंपेयर mortality rates. It is to compare the mortality rates. It is to compare the mortality rates. And just standardization, it can be of two types. We can have a direct standardization or we can have indirect standardization. When do we do direct standardization? Direct standardization is comparing one population. ध्यान से सुनना इसको. Compare one population with a reference population and the age specific
डेथ रेट्स ASDR, एज स्पेसिफिक डेथ रेट्स आर नोन. ये बड़ा इंपॉर्टेंट मैंने लाइन लिखी है, इफ द एज स्पेसिफिक डेथ रेट्स आर नोन. सो आप एक क्या करते हैं, अगर आपको पॉपुलेशन की एज स्पेसिफिक डेथ रेट्स पता है, ध्यान से सुनना बस, जस्ट लिसन टू इट. यू ऑलरेडी नो, ये एक फिजेट स्पिनर है, मैं इसके साथ खेलता रहता हूँ. सो दिस इज जस्ट अ फिजेट स्पिनर. लेट अस से यू हैव दिस पॉपुलेशन. ये एक तरफ आपके पास पॉपुलेशन है एंड ऑन द अदर हैंड यू हैव अनदर पॉपुलेशन. यू वांट टू कंपेयर के इन दोनों में डेथ रेट्स में क्या फर्क है. ध्यान से सुनना. So now if you have the age specific death rates ASDR of this population and of this population, अगर आपको पता है वो death rates, तो आप क्या करेंगे, आप इस population को एक reference population, ये हमारे पास एक reference population, let us say ये मेरा phone जो है ये हमारे पास एक reference population है. So I will compare the death rates of this with the death rates of this reference population. मेरे को इसका age specific death rates पता है and reference का तो पता ही होता है. So now I compare this with this population and I compare this with the reference population. तो तीनों चीजें compare होगी ना. Are you getting this? So that is called as a direct standardization. But now when do we do indirect? ध्यान से look देखना इसको. Indirect हम कब करते हैं? Indirect is when we compare one population with the reference population and the ASDR is not known. It is not known. Age specific death rates इस population के, ये fidget spinner का age specific death rate is not known. If you don't know the age specific, age wise कितनी deaths हुई ये नहीं पता अगर आपको, तो आप इसके साथ compare कैसे करेंगे age specific death rates में. So we cannot compare the age specific. We do indirect standardization. Indirect standardization में we calculate something called as standardized mortality ratio. We calculate something called as standardized mortality ratio, which is the observed deaths divided by the expected deaths. Observed deaths divided by the expected deaths, इनको हम standardized mortality ratio multiplied by 100. That is what is standardized mortality ratios, and that is what we calculate in indirect standardization. So ये मैंने आपको थोड़ा सा in depth बताया about standardization because I expect कि ये एग्जाम में पूछा जा सकता है. दिस इज अ 3-star MCQ पॉइंट फॉर यू एंड यूजली स्टूडेंट्स इसको छोड़ के जाते हैं, तो इसलिए मैंने आपको पढ़ाया है. सो एनीवेज, बेस्ट आंसर ओवर हियर. व्हाट इज द बेस्ट आंसर? इट इज बिकॉज ऑफ डिफरेंस इन द एज स्टैंडर्डाइजेशन. आई थिंक बस 2 क्वेश्चंस और हैं, 2 more questions to go. Which of the following is not correct? Which of the following is not correct? Odds ratio if more than 1 indicates positive association. What do you think? Attributable risk is amount of disease among the exposed group. Relative risk is calculated in cohort studies and specificity of association is most essential to establish causality. क्या बोलना चाहते हो? What do you think? What do you think is the best answer? Which of the following is not correct? गलत वाला ढूंढना है. थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है ये. So what do you think is the incorrect answer? गलत ढूंढना है. Odds ratio if more than 1 indicates positive association. Beta, please note odds ratio. Odds ratio. It is calculated in case control studies. It is calculated in case control studies. Odds ratio is a cross product ratio. Odds ratio, if it is more than 1, it means positive association. Less than 1, it means negative association, and equal to 1, it means no association. It is no association. क्या बोलना चाहते हो? काफ़ी स्टूडेंट्स ने आंसर कर दिया. शाबाश मेरे शेरों. एट्रीब्यूटेबल रिस्क D, D, B और C. सो कोई B कह रहा है, कोई D कह रहा है. ऑड्स रेशियो इफ मोर देन 1, ये तो ट्रू हो गया. दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट. ये तो ठीक होगी ना बात. कुछ स्टूडेंट कह रहे हैं एट्रीब्यूटेबल रिस्क इज अमाउंट ऑफ डिजीज अमंग द एक्सपोज्ड ग्रुप. ये गलत है. कुछ कह रहे हैं रिलेटिव रिस्क इज कैलकुलेटेड इन कोहॉर्ट स्टडीज. ये गलत लग रहा है आपको. इनकरेक्ट बताना है गुरजोत को. स्पेसिफिसिटी ऑफ एसोसिएशन, इट इज मोस्ट एसेंशियल टू एस्टैब्लिश कॉजालिटी. काफी स्टूडेंट्स बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ. क्या बात है, ये हुआ. जय हिंद. बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ. ऑप्शन डी. आकांक्षा यादव, ऑप्शन डी. सो एनीवेज, कमिंग बैक टू द स्टोरी. सो ऑड्स रेशियो तो करेक्ट होगी. ऑड्स रेशियो, दिस इज ट्रू. ओके, ऑड्स रेशियो इज ट्रू. नेक्स्ट इज व्हाट डू यू मीन बाय एट्रीब्यूटेबल रिस्क. एट्रीब्यूटेबल रिस्क क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय एट्रीब्यूटेबल रिस्क? बेटा एट्रीब्यूटेबल रिस्क ध्यान से सुनना. एट्रीब्यूटेबल रिस्क इज गिवन बाय द फॉर्मूला इंसिडेंस एक्सपोज्ड
minus incidence non-exposed divided by the incidence in exposed group. Incidence of disease in the exposed group minus incidence non-exposed divided by incidence exposed. होता क्या है? Attributable risk tells you कि स्मोकिंग की वजह से कितने लोगों को कैंसर होता है, ठीक है, बट ये कैलकुलेट कैसे होता है? इट इज द परसेंटेज, ध्यान से सुनना, इट इज द परसेंटेज ऑफ डिजीज विच हैपन्स अमंग द एक्सपोज्ड पॉपुलेशन, मतलब स्मोकर्स में कितने लोगों को कैंसर हो रहा है बिकॉज ऑफ देयर स्मोकिंग. ये फंडा जो है दैट इज गिवन बाय एट्रिब्यूटेबल रिस्क. डिड यू गेट दिस? स्मोकिंग कॉजेज लंग कैंसर. यहां तक तो बात क्लियर है ना? ध्यान से सुनना. स्मोकिंग, आई रिपीट अगेन, मेरे को पता है यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो रहे होंगे. सी, यू ऑल नो स्मोकिंग कॉजेज लंग कैंसर. यहां तक तो क्लियर है. आई टेक सम पीपल हु आर स्मोकर्स and I take some people who are non-smokers. Why? Because risk factor is there, risk factor is there, and risk factor is not there. Cohort study है ना, risk, attributable risk you calculate in cohort studies. So you take some people, 100 लोग आपने लिए, 100 लोग लिए who are smokers and 100 लोग लिए who are non-smokers. इनमें कुछ लोगों को डिजीज हो गया, कुछ लोग वो डिजीज फ्री, इनमें से कुछ लोगों को डिजीज हो गया, कुछ लोग वो डिजीज फ्री. ऐसा ही होगा. Now you see, ध्यान से सुनना, attributable risk, it is, now you see how many people get disease out of these smokers, and ये आप कंपेयर करते हो in the non-smokers. So it basically, it is given by the formula incidence exposed minus incidence non-exposed divided by incidence exposed. It tells you amount of smokers who will get disease because of their smoking. So ये उसका technical formula, ये उसका technical definition है. What is attributable risk? It is the percentage of disease due to exposure factor smoking among the smokers. इसको हम attributable risk कहते हैं. अगर आप total population देखो, amount of disease because of the exposure among the total population वो अलग होता है, that is called as population attributable risk. But for your FMG exam over here, this is what you need to know, what is attributable risk. Beta, attributable risk, it is calculated in cohort studies. ये exam में बहुत दफ़ा पूछा हुआ है. It is calculated in cohort studies. What is the formula? Formula आपके सामने है. It is incidence exposed minus non-exposed over exposed. It is the amount of disease because of the smoking or exposure within the smoker category. Smokers में जरूरी नहीं ना हर एक को डिजीज हो जाए. स्मोकर में स्मोकिंग की वजह से कितने लोगों को बीमारी होती है, वो होता है एट्रीब्यूटेबल रिस्क. तो उस बेस पे एट्रीब्यूटेबल रिस्क इज अमाउंट ऑफ डिजीज अमंग द एक्सपोज ग्रुप. ये तो ट्रू ऑप्शन होगी ना, ये सही हो गया, ये भी तो ट्रू हो गया. दैट इज व्हाट आई वाज सेइंग. रिलेटिव रिस्क इज कैलकुलेटेड इन कोहॉर्ट स्टडीज. बिल्कुल सही है, ये तो आई थिंक सबको पता होना चाहिए. रिलेटिव रिस्क is calculated in cohort studies. Relative risk का formula क्या होता है? It is incidence exposed divided by the incidence in non-exposed. Relative risk same answer है, equal to 1 means no association. If it is more than 1 it means a positive association, less than 1 it means a negative association. Right? Relative risk का भी same answer है, so ये भी true हो गया. So what is wrong? Wrong is specificity is most essential. ये एक चीज गलत है. This is a wrong statement. Specificity is most essential. This is false. What is most essential? Most essential is not specificity. ये एक चीज होती है, ये भी बहुत frequently एग्जाम में पूछा गया है. What are the Hill's criteria for causal association? एग्जाम में पूछा जाता है what are the Hill's criteria for causal association? So Hill's criteria for causal association 6 criteria होते हैं. Biological plausibility, it means there should be some biological explanation. आप ऐसा नहीं बोल सकते कि blinking of eyes causes heart attack. ये तो कोई बात ही नहीं बनी कि a person who is living उसका हार्ट भी चल रहा है और वो ब्लिंक भी कर रहा है, तो ये थोड़ी ना कि ब्लिंक करते समय की वजह से हार्ट अटैक हो गया. कोई तो सेंस लगना चाहिए, बायोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन होना चाहिए ना. सो दैट फंडा दैट इज कॉल्ड एज बायोलॉजिकल प्लॉजिबिलिटी. कोहेरेंस मतलब एवरी टाइम द रिस्क फैक्टर शुड लीड टू डिजीज. ये भी बड़ा मुश्किल होता है, बट दे से दैट रिस्क फैक्टर शुड कॉज द डिजीज एवरी टाइम. डोज रिस्पॉन्स मोर द रिस्क फैक्टर, दैट मीन्स मोर द डिजीज. मतलब वो प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होना चाहिए. ज्यादा रिस्क फैक्टर ज्यादा डिजीज, लेस रिस्क फैक्टर लेस डिजीज, मोर रिस्क फैक्टर मोर डिजीज. राइट? सो दैट इज व्हाट इज डोज रिस्पॉन्स भी होना चाहिए बात में.
like hypertension and triglyceride levels. We usually see more triglyceride may cause more hypertension. Zaruri nahi hai, but yes, it usually does that. Then is specificity. Specificity hota hai same risk factor should lead to same disease all the time. कि स्मोकिंग से कैंसर ही होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि कैंसर कैन बी बिकॉज ऑफ समथिंग एल्स. अब ये तो कोई बात नहीं ना बनी. दिस इज लीस्ट इंपॉर्टेंट. स्पेसिफिसिटी इज मोस्ट difficult to establish, it is less important, and more important, it is relevant only for infectious disease. Infectious disease के भी विब्रियो कॉलरा से कॉलरा ही होगा, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस से ट्यूबरक्लोसिस होगी, यर्सीनिया पेस्टिस से प्लेग होगा. सो ऐसा नहीं है कि प्लेग कभी कॉलरा से हो रहा है, कभी स्टैफ से हो रहा है, कभी स्ट्रेप से हो रहा है. इट डजंट हैपन लाइक दैट. So communicable disease में usually it is imperative, it is logical to find out a specificity of association that one disease is primarily caused by one risk factor. That is what is specificity. It is very difficult to establish. But what is most essential? Most essential is temporality. Most important. This is the single most important, that is the risk factor should always precede मतलब उससे पहले होनी चाहिए, precede the disease. रिस्क फैक्टर शुड ऑलवेज बी बिफोर. ये तो कॉमन सेंस है ना. स्मोकिंग के बाद लंग कैंसर होना चाहिए, लंग कैंसर के बाद थोड़ी ना स्मोकिंग करनी चाहिए. आर यू गेटिंग इट? सो दैट इज व्हाट इज टेम्पोरलिटी. बस इसमें. एंड लास्ट इज वैलिडिटी. वैलिडिटी मीन्स दैट देयर शुड बी अ वैलिड एसोसिएशन, इट शुड हैव अ पॉजिटिव एसोसिएशन. दैट्स इट. सो इसमें सिर्फ दो ही एमसीक्यू. विच इज द मोस्ट डिफिकल्ट टू एस्टैब्लिश? बोलो मेरे साथ. विच इज द मोस्ट डिफिकल्ट टू एस्टैब्लिश? दैट इज स्पेसिफिसिटी ऑफ एसोसिएशन. विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टू एस्टैब्लिश? दैट इज टेम्पोरलिटी ऑफ एसोसिएशन. टेम्पोरलिटी मीन्स टाइम में, स्पेस में वो रिस्क फैक्टर शुड बी बिफोर द डिजीज. दैट इज वॉट यू नीड टू रिमेंबर, एंड दैट इज वॉट हैड बीन आस्क्ड इन दिस क्वेश्चन. सो ये थोड़ा सा गूगली क्वेश्चन था. What is the best answer over here? Option number D you are going to mark because that is the incorrect answer. Okay, last question of the day, and that will be all. Which of the following is the highest level of evidence? Which of the following is the highest level of evidence? क्या बोलना चाहते हो? Meta analysis, systematic reviews, randomized control trials या quasi experimental designs? What do you think is the best answer? Which of the following will have, is will nahi, which of the following will have the highest level of evidence? Meta-analysis, systematic reviews, randomized control trials या quasi-experimental designs? Option A is the best answer. Very nice. I think everybody has done it right. Yes. Reshma, Devanjana, Akansha, so proud of you. Beti bachao, beti padhao. Yeah, that's the time to go. Which of the following will have the highest level of highest level of evidence? Answer is meta-analysis. I think ये मैंने Instagram अपने प्रोफाइल पे कुछ ही दिन पहले ये फ्लैश कार्ड शेयर किया था बेटा. MMFC, कभी सर्च करना MMFC, दैट इज मुखमोहित फ्लैश कार्ड्स. सो नंबर 2021, ये साल नहीं है, ये 2000 फ्लैश कार्ड्स आपके लिए अवेलेबल हैं हमारे पास. So 2021 was the number of the MMFC Mukhmohit flashcards, and ये हमने WHO levels of research evidence ये अभी हमने इंस्टा पे पोस्ट किया था. And these can be asked in your exam. Level 1A, 1B, 2A, 2B, and 3 and 4. So what is level 1A? That is the highest level of evidence that is given by meta-analysis of the randomized controlled trials. नेक्स्ट इज 1B. एटलीस्ट वन randomized control trial होनी चाहिए, बाकी कोई और स्टडीज हो सकती हैं. एटलीस्ट वन ट्रायल विदाउट randomization, दैट कम्स एज level 2. Quasi trials level 2. Level 3 is descriptive studies, comparative studies, analytical studies, correlational studies, cross-section studies, and so on. लास्ट इज एक्सपर्ट ओपिनियंस. ये भी एग्जाम में पूछा गया है. व्हाट इज दिस लेवल? लेवल 4 इनको कहते हैं. लेवल 4 एविडेंस होता है. लेवल 4 इज द लोएस्ट लेवल. लेवल 1A इज द हाईएस्ट लेवल. सो एग्जाम के लिए बस याद रखो मेटा एनालिसिस इट इज लेवल 1A. इट इज द बेस्ट लेवल ऑफ एविडेंस, एंड विद दिस बेस्ट लेवल ऑफ एविडेंस आपको एग्जाम में क्या मार्क करना है? आंसर ओवर हियर इज मेटा एनालिसिस. रट लो इसको, एग्जाम में पूछा जाएगा. एविडेंस बेस्ड मेडिसिन का ये पार्ट है. एंड विद दैट, थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग द टुडेज सेशन. थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग टुडेज सेशन. क्या बोलना चाहते हो? What is any doubts you have? Anything you want to ask? You're free to ask me. क्या करोगे, क्या सुनोगे, क्या करना है अभी? और
बोलो बोलो, any doubts, anything you want to ask? Any doubts, anything you want to ask? You are very welcome to ask. Right? यूजुअली ऑन ऑल वेडनेसडेज आई एम अवेलेबल ओवर हेयर. ये हमारे जो लिंक्स हैं ये आप उनको ज्वाइन करिए. आपको कोई डाउट्स होंगे यू आर वेरी वेलकम टू आस्क मी. एंड यूजुअली आई ट्राई कि अगर इन केस कोई काम ना हो तो आई एम लाइव ऑनलाइन विद यू फॉर 30-40 मिनट्स 1 आवर तक मैक्सिमम. एंड मज़ा आ रहा है, पढ़ाते रहें सर. अभी कहाँ है ये, थोड़ा टाइम बाउंड होता है. सो ऑल द स्टूडेंट्स हु आर बोर्ड ऑफ स्टडिंग द होल डे, शाम को वैसे ही थोड़ा हंसी मजाक हो जाता है. और हमेशा मेक श्योर कि आप ना डिसिप्लिन में रहना चाहिए. एक डिसिप्लिन पे मैंने बोला किसी को कि डिसिप्लिन में रहना चाहिए, वो कहता है सर किसी को कांटों से, ध्यान से सुनना, किसी को कांटों से चोट लगी, किसी को फूलों ने मार डाला है, किसी को कांटों ने से चोट लगी, किसी को फूलों ने मार डाला, और जो उनसे बच गए उन्हें असूलों ने मार डाला, उन्हें पीएसएम पढ़ाई ने मार डाला. थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग टुडेज सेशन. ऑल द वेरी बेस्ट एंड हैव अ गुड नाइट. पीएसएम से डरना नहीं है, पीएसएम को प्यार करना है. प्यारे प्यारे सब्जेक्ट है, बहुत ईजी सा सब्जेक्ट है. एंड कीप ऑन लाफिंग, कीप ऑन स्माइलिंग. ऑल द वेरी बेस्ट, कीप ऑन स्टडिंग. सी यू मे बी नेक्स्ट वेडनेसडे. आई ट्राई टू बी ऑनलाइन ऑन ऑल वेडनेसडेज एटलीस्ट, जब तक आपका एफएमजी एग्जाम नहीं हो रहा. So all the students over here, take care. Very good night. Thank you so much. Bye-bye. Take care.